बस्तर गए, छत्तीसगढ़ में बस्तर गए हम, और सिर्फ मैं और वो गए थे, और मेरे घर में सब लोग डिज़ास्ट्रस एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ ऐसा मुझे बता चुके थे। हालांकि सिर्फ एक चीज़ मुझे नहीं आती थी, जो था कि मेरी बेटी की चोटी बांधना, जो हमने YouTube से किसी तरह से सीखने की कोशिश की और सफल रहे। And when we were going there, I told my daughter that we are going to learn from tribal culture, and that was our vantage point, that was our entry point into this most fascinating world of tribal heritage of this country. And when we went there, we not just saw the food, not just saw the handicrafts, but I don't know how many of you know about memory pillars. यूके के स्टोन हेंजेस के बारे में आपने सुना होगा, उसकी तस्वीरें देखी होंगी, but in the tribal heartlands of India, there were stone pillars where there is the storytelling of people's lives when they pass away. जब लोग गुजर जाते हैं तो उनकी जिंदगी की कहानी चित्रों के माध्यम से उन पत्थर के शिलालेखों पर लिखी जाती है, और ऊपर एक चिड़िया होती है, a bird that signifies their life, and it is believed that when that bird goes to the village of the departed and sees that सब लोग खुश हैं, everybody is happy, they're also happy, those spirits are happy, those souls are happy. And what I said on camera that day was that we hear this phrase so much nowadays, grief management. This was right after Corona, and we hear so much about grief management, and here it is in the heart of tribal India, a most beautiful, a most mature way of dealing with grief, which most of us don't know about. I think what Mankabaat has done as an extraordinary communication initiative is to take us back to a lot of these ideas. A lot of people who are exercising, living, teaching us these ideas. And these are people who are among us. मैं अक्सर कहता हूँ कि our role models, our heroes are among us. And we as a country do not incentivize our grassroots heroes, and I'm delighted that this initiative does. So the idea for this disparate panel today, मैं कैसे बांधूं इतने काबिल लोगों को एक धागे में, मैं सोच रहा था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विरासत की, we're talking about heritage, our traditions, our legacy. लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो खाते हैं, जो जीवन जीते हैं, उसमें हर जगह हमारी विरासत का एक हिस्सा है, विरासत का आईना है. And I'm really, really happy that a lot of that is being, I hate to say the word, mainstream now. It is our mainstream, but that way of living, looking at culture, it is coming back, it is becoming more acceptable. So I'll start with Ricky. Ricky, do you feel this is happening to begin with? Thank you for starting with me. But I do believe that with mankabaat, because I've been a very ardent follower of mankabaat for the last 99 episodes, and I especially, my ears completely open wide every time Prime Minister Modi speaks about music. So he's spoken in the past about the various festivals in India, like the Hornbill Festival, the festival in Ladakh, and I started studying these festivals, studying who are the musicians who are curated for these festivals. This year, in fact, in January, he spoke about how tribal persons have won a whole lot of Padma awards this year. So then I started studying about each and every Padma award winner who was a tribal person or associated with tribal people. And I realized that a whole lot of them are musicians and artists, and I started studying their art, and I realized that they're absolutely amazing people with amazing art forms, and the musicians among these tribal people were creating, had songs about nature, songs about sustainability, songs about harvest, which is amazing material that all of us in the world can learn from. And then in February, he spoke about these two musical instruments that are becoming more and more obscure, the Sur Singar, which is now, as Prime Minister Modi said, that Joydeep Mukherjee is breathing life into it.
and the other instrument is the mandolin, which is becoming less and less popular in India. And he spoke about how Yu Srinivas is breathing life into the mandolin. And it is amazing because for me it was sort of like a resurgence in my life of these two instruments, because the Sur Singar sounds a lot like the sarod, but it has got a much deeper tone. And I decided to start using that in my music. So I guess, it's really important to actually, as you said, mainstream this music, simply because we ourselves in India are losing touch with our own heritage when it comes to music, our own culture when it comes to music, and music forms that are born in India, especially the ancient forms of music. We are sort of losing touch with it, and it's important to mainstream it. Thank you. रिकी जो बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी हमारी ज़िंदगी से, आपके हमारे बड़े होने से जुड़ी हुई हैं बहुत सी परंपराएं। जब बच्चे जन्म लेते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, तो पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, परंपराएं होती हैं, बच्चों को सूर्य को दिखाया जाता है। और अब जब मैं बात करता हूँ नियोनेटल और पोस्ट नेटल एक्सपर्ट से, तो कहते हैं कि इसमें बड़ी सूझबूझ है, बड़ी अक्ल है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि परंपराएं जो उस समय के लिए सही रही हों वो हमेशा के लिए सही रहे, वो भी हमें बदलाव लाना होगा, लेकिन उन जड़ों को थाम के चलना। और खासकर जब आजकल बात होती है कुछ खाने की, हम मिलेट्स की बात करते हैं या पेड़ों को बचाने की बात करते हैं, अपनी नदियों की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट का जिक्र जो हमारे लोकगीतों में बसा हुआ है, हमारे बड़े होने में, हमारे गाँवों में, हमारे त्योहारों में रचा बसा हुआ है, उसकी बात दोबारा जब हम सोशल मीडिया पे रील्स में देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं छूट गया था इन सब बातों का हाथ, और अब फिर से हम उनको थामने चले हैं। मेरे साथ मेहमान हैं ऑनलाइन दाजी, जो एनवायरनमेंट और हार्टफुलनेस के बारे में हमसे कुछ बात करेंगे, और ये भी कि how are we going back to our traditions on the environment and as a way of living, and what is heartfulness? I hope we have a guest from Manila. You join later. Okay. Well, जगत जी, आपका भी बड़ा फेवरेट मुद्दा है। जगत जी, स्पैरोज, गौरैया हमारे बचपन का हिस्सा रही हैं, लेकिन वो लुप्त हो गई, गायब हो गई। हम सब बचपन में उनको देखते थे, खेलते थे, उनके इर्द गिर्द हम उनके चित्र बनाते थे, लेकिन वो गायब हो गए। और भारत में कुछ लोग हैं जो अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं इन पवित्र कामों को। जगत जी उनमें से एक है, और उसके बारे में बताइए, और फिर उसका जो उससे जुड़ा हुआ जो इकोसिस्टम है एनवायरनमेंट का, और क्यों जड़ों की ओर जाना कैसे जरूरी है और क्या हो रहा है। ये पृथ्वी जो है उसके ऊपर मिलियंस ऑफ टाइप्स के जीव हैं, जिसमें से हम लोग इंसान भी एक प्रकार का छोटा सा जीव है। हर एक जीव कोई पर्पस लेके और कोई रोल के लिए यहाँ आए हुए हैं। ऊपर वाले ने हमें भी कोई स्पेसिफिक रोल लेके यहाँ भेजा हुआ है, और वो हमें परफॉर्म करना है। उसी को हम कहते हैं कि ये भी अच्छी तरह से जिंदगी जिए, अपना जो रोल लेके आए थे वो निभाया। 2008 में जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि वर्ल्ड ओवर स्पैरोज एक्सटिंक्ट हो रही है, तो बचपन में अपने आसपास बहुत रहती थी, और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थे। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा अभ्यास किया, गौर से सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसमें से सब पता चला कि भाई ये नेगेटिव न्यूज़ को मैंने पॉजिटिव तरीके से ले जाने के लिए अगर मुहिम चली, और नेस्ट का जो स्पैरो का स्टडी करके उसको जो लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से वो लुप्त हो रही थी, उसको वापिस लाने के लिए काम शुरू किया। और धीरे धीरे ये काम इतना आगे बढ़ा कि इतनी सफलता मिली है कि इस पे अद्भुत काम हो सकता है। और ये हेरिटेज की बात करें हमारे, कि अगर हम नेचर कंजर्वेशन पे काम नहीं करेंगे या नहीं उसको साथ में लेके नहीं चलेंगे,
तो सभी के लिए जो क्लाइमेट चेंज बोलते हो या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो, वो एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों को साथ में लेकर हमें आगे जाना है, वरना हम पिछड़ जाएंगे, ऑलरेडी लेट है। और मेरा ये कहना है कि मैं अगर अकेला अपने एक आदमी की मेहनत से, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नेस्ट पूरे हिंदुस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा हूँ, बांट रहा हूँ, मैं सेशंस कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कलेक्ट कर रहा हूँ उसकी स्पैरोज की, जो मैंने दिए हुए नेस्ट में से है सक्सेस स्टोरीज, उसकी पूरी लाइफ के बारे में। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं एक अकेला आदमी, मेरे फैमिली की सपोर्ट से, मेरे फ्रेंड्स और कॉरपोरेट्स की सपोर्ट से 2.5 लाख से ज़्यादा मैंने वीडियोस डॉक्यूमेंट किए हैं जो मेरे दिए हुए नेस्ट में है। यानी 2.5 लाख से ज़्यादा चीज़ मेरे नेस्ट में आ सकती है। अभी मेरा ये आपको सजेशन है, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ये कहना है कि ये बात जब मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने 2017 में की, उसके बाद में पूरे देश में से और कनाडा से लेके यूएसए से लेके हर जगह से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं और बर्ड्स कंजर्वेशन और नेचर कंजर्वेशन, ट्री कंजर्वेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सफलता मिलती है, बहुत मामूली इसका खर्च है। और ये हमारा हेरिटेज था, हमारे संगीत में था, साहित्य में था, हमारे हर रोज के जीवन में था। और अब हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर ये सब पीछे छूट गया है, हम 4 दीवार में कैद हो गए। ह्यूमन इज द ओनली लिविंग बीइंग विच इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट, अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर लाइफ्स। बट ये इसको अगर आप साथ में लेके चलोगे तो ये बहुत सुनहरा आपके लिए अवसर है और आपको अंदर से बहुत सुकून मिलता है कि उसका जब आप चर्पिंग सुनते हैं और आपके बनाए, आपके दिए हुए घोंसले में अगर 4-6 बच्चे आ गए जो आपका कंट्रीब्यूशन है, तो उसका चर्पिंग सुनोगे तो बहुत मज़ा आती है। और ये अपना स्पेसिफिक रोल लेके आया है, वो हमको बेसिकली समझना है। जब हम छोटे थे तब समझ लीजिए कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग नहीं थे। साइंस बता रहा है कि ये जो पिछले सालों में आया है वो पूरी फूड चेन टूट गई है और इंसेक्ट्स और वो सब जो ये पक्षी घर के अगल बगल के खा जाते थे, अभी वो नहीं है, या तो पेस्टिसाइड इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से ये सब मर जाते हैं। और उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स है उसके शरीर के अंदर जो वायरसेस स्ट्रॉन्ग हो गए, वो अलग रोग लेके अपने सामने आ जाते हैं और इसके ऊपर कोई जल्दी दवाई की असर भी नहीं होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के इसका कोई स्पेसिफिक रोल है और ये ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास में बड़े बड़े हैं, ये फॉरेस्ट के नहीं है। तो ये पृथ्वी के हम मालिक नहीं हैं और इसको हमें अच्छी तरह से सभी जीव को न्याय देके सभी को साथ में लेके चलना है। बहुत शुक्रिया। जगत जी जैसे लोग तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, वो अपने जीवन में अपने अपने तरीके से ये जो छोटी बड़ी साधनाएं करते रहते हैं जिससे हजारों लाखों लोग फायदा पहुंचाते हैं। कई बार जान नहीं पाते कि ये कौन सा तपस्वी है जो कहीं पर चिड़ियों को बचा रहा है या नदियों को साफ कर रहा है या पेड़ों को कटने से बचा रहा है। और मुझे लगता है कि हमें आसपास ऐसे साधकों को देखने की, उनके बारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने की बहुत आवश्यकता है, बिकॉज आवर हीरोज आर अमंग अस। हमने जो बात की इस समय, आप में से बहुत से लोगों को शायद थोड़ा सा लगा होगा कि ये एकेडमिक सी बातें हैं, लेकिन अगर आप अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, बुजुर्गों से बात करेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। और आजकल हम जिस वक्त में हैं जहां पर हमें बताया जा रहा है कि children must code at the age of 4 and 5, otherwise their futures are ruined. This is what is being told to us. At that time, I think it's very necessary to remind ourselves that playing with birds, playing with mud, running after goats, this is what shapes us, what shapes our brains, what gives us cognitive thinking, and this is what we need to celebrate. इसी को तो बचाना है। मिट्टी से, मेरी बेटी, मेरा जहाँ घर है गांव में, लखनऊ से 1.5 घंटे की दूरी पे,
तो वो मिट्टी से खेलती है, गाय बकरी के साथ खेलती है, उसके दोस्त बगल के खेतों से आके कोई मूली दे जाते हैं, और जो वो सीख रही है इस प्रोसेस में, वो कोई किसी भी ऐप के थ्रू वो नहीं सीख सकती, ये मैं जानता हूँ। तो जगत जी जैसे लोग उस शिक्षा व्यवस्था, उस सीखने की परंपरा के भी ध्वजवाहक हैं। They are the flag bearers of that tangible and intangible form of learning that our culture has given us over the centuries, which we have to preserve. So this is not just, ये सिर्फ गौरैया की बात नहीं हो रही है, ये आपकी मेरी बात हो रही है, हमारे बच्चों की बात हो रही है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं मिजोरम से, और अगर मन की बात में हमने उनके बारे में सुना नहीं होता तो ऐसा हो सकता है कि हम उनके बारे में नहीं जान पाते। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा रोशन देना जी से। So would you like to tell us a little bit about, I was talking about going back to basics, going back to roots, and Jagat ji was speaking about the environment, and you have done tremendous work on rivers. Would you like to tell us about that? Thank you, sir. In his 90th episode of mankabaat, our Honorable Prime Minister Narendra Modi has highlighted the effort and endeavor to save the dying river of Chitali, a beautiful and historic rivulet which flows beside Aizawl, the capital city of Mizoram. Today, on behalf of the Safe Chitali Coordination Committee and on my own behalf, first of all, I extend a sincere thanks and gratitude to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for extending his concern, mentioning and endorsing the campaign, the ongoing struggle to save the Chitali in his mankabaat program. I'm really convinced that the Prime Minister's encouraging words will certainly embolden and inspire the committee, all the partakers in the movement, and each and every stakeholders in all aspects to save the iconic historic river. I would like to introduce to you the famous iconic Chitali. Chitali means river. So Chitali River. Chitali is one of the most important, notable, most renowned, and one of the celebrated river of Aizawl. The river is said to derive its name, Chitali, due to the bland and unsalted water when it collided with a small stream, another stream called Sikui River, at the southern part of Aizawl. As a matter of fact, Chite means less salt, calm nama, less salt. Chitali is situated at the eastern part of Aizawl city. The river has its source at the mountain ranges of what we call Bongkon at the northern end of Aizawl city. This beautiful river flows beside Aizawl city and joins another river, Irian, which is longer and larger than Chite River. And the entire length of the river from the source till it confluents into Irian River is approximately 20 kilometers, which is bounded by patches of forested mountains on the opposite side. Apart from its scenic beauty, it is one of the natural resources which contribute much to the well-being of the city. Colorful wildflowers and large collection of flora and fauna are found in the region. And like many rivers in Mizoram, Chitali is a tropical mountain river which is mainly fed by rainfall or rainwater from its catchment area. The Chitali comprises of several mountain major and important tributaries, around 19 in total. Among these tributaries, some of them are very much prominent and as old as Aizawl city itself, Mirongli, Bangalui, etc., etc. However, on the other hand, since all the tributaries are flowing right from several localities of Aizawl city, especially the northern part of Aizawl here, large areas of vicinities are spreading. At this moment, it has been unfortunate to see that they are the major polluter of the Chitali.
And this situation has been among the worst case scenario or a heavy cross to bear for the Safe Chitali Committee. The river has significant historical values for the Mizo as well. It is notable to say that even the poet of the century, the greatest poet among the Mizo, has composed a song which was shown great honor and admiration for the river. If we look at the aerial photograph of Chitali as shown in the Google map, we could have a more holistic or comprehensive view of the river. At the left side, we will see the central portion of Aizawl city where several big localities are situated. At the right side, we will see some part of another sizable locality. It is evident that both sides of the river are overcrowded, overpopulated, and immensely congested, full of houses of every size in an unplanned and uncoordinated manner. The entire garbage, waste, and any form of trash from the city is sweeping down into the Chita River and moreover further into another river, Irial, which disturb many farmers and harvesters at the hinterland of the river. The first thing that the committee had encountered at the outset of our venture is about the unregulated dumping of art spoils. Aizawl city is a fast-growing city. New houses construction are sprouting out everywhere, however without unplanned and proper regulation. During those days, Aizawl municipal corporations regulation were not implemented or enforced. So several years, Chitali has been one of the favorite dumping places for builders and contractors, drivers and laborers. Another thing that we have come upon during the initial period of the movement is about excess garbage and trash. We can say that almost 99% of the trash is coming down from several localities in the city through various tributaries. When the Safe Chitali movement was formally started in 2017, several initiatives had been taken to tackle this problem. Let me illustrate only 2-3 points. The first thing that we did was creating awareness to the people, educating the masses. Another achievement is the legislation of the Chitali Prevention and Control of Water Pollution Act and rules, and another thing that I would like to mention is about the plastic road, which is also mentioned by the Honorable Prime Minister. I think these are just very inspiring. This is a very inspiring example and very relevant because in large parts of our country, rivers are under threat, water bodies are under threat. In villages, ponds are under threat, and I think Rosham Lianaji's pursuit and the pursuit of his colleagues at his group is a lesson. And I don't think we would have come to know about his amazing efforts were it not for mankabaat. So